अपना शेयर हलाल जैरो ग्रिल चूका, ये हमारा सेकंड लोकेशन है। I'm always here for you. Go Halal cart. Halal cart. I'm so excited for Halal cart too. So hyped to have Halal cart 2 open right near us. So excited for this food! It's gonna be so good! We're so excited! And we've been fans of the Halal cart for 4 years now. We were expecting a lot of people, and we अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस दुआ के साथ कि सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बड़े अरसे के बाद एक व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज हमारे दोस्तों का एक नया फूड ट्रक ओपन हो रहा है यहाँ पे स्टेट कॉलेज पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में। छोटा सा प्यारा सा टाउन है। इस पर मैंने पहले भी एक इस तरह के 2-3 व्लॉग्स बनाए थे। तो आज आप लोगों को एक फूड ट्रक ग्रैंड ओपनिंग व्लॉग दिखाता हूँ और अपने दोस्तों से भी मिलवाता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। तो ये है प्रेस्बिटेरियन चर्च, बिल्कुल बीवर एवेन्यू पे, और बिल्कुल इसके सामने नया फूड ट्रक ओपन हुआ है और शेर हलाल जैरो ग्रिल 2। तो ये अभी वो गेट तैयार कर रहे हैं गुब्बारे लगाने के लिए। स्पेशलिटी इनकी प्लेटर्स है जिसमें चिकन ओवर राइस, लेम्ब ओवर राइस एंड कम्बो ओवर राइस। इसके बाद एक जायरो और फिर है कम्बो जायरो एंड साइड्स और सैलड प्लेटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, खैरियत। मेरा नाम रेहान खान है और अभी हम ग्रैंड ओपनिंग कर रहे हैं अपना शेयर हलाल जैरो ग्रिल चूका, ये हमारा सेकंड लोकेशन है। और हमने स्टेट कॉलेज पे अपना दूसरा लोकेशन ओपन किया है। पेंसिल्वेनिया का मेरा सबसे फेवरेट शहर है ये और बहुत अच्छा शहर है। और तो आप सभी लोग को वेलकम करता हूँ। कभी भी आप से कॉलेज पे आओ तो हमारे यहाँ पे खाना ज़रूर खाओ। Where we at? We the We're so hyped to have Halal cart 2 open right near us. Let's go. Attaboy, lad. Good show. Here we go. Thank you. Yeah. You want to say something? Yes! What is it? It's a mic. Wait, what? You can say anything. I'm so excited for this food! It's gonna be so good! Okay. We're so excited! Thank you. Thank you. Excellent. Hi.
You know, one of the all-time greats. Never doubted you guys. I'm always here for you. Go Halal Cart. Thank you. I love Halal Cart. I'm so excited for Halal Cart 2. Thank you so much. You're welcome. ईस्टर का सीज़न है, जितने भी स्टूडेंट हैं ऑलमोस्ट 30 to 40% स्टूडेंट जो है वो अपने घरों को जा चुके हैं। तो फिर भी आप लाइन देख सकते हैं, यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पॉपुलर है हलाल फूड। तो अभी बारिश भी स्टार्ट होने वाली है, खुदा करे कि बारिश इतनी ज़्यादा ना हो और इन लोगों को जो है वो तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड गुड इवनिंग पेन स्टेट। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारा आज फाइनली वो दिन आ ही गया है कि हमारा शेर हलाल जायरो का सेकंड ब्रांच जो है वो खुल गया है। हम काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से, दूसरा ये है कि ईस्टर आने की वजह से बहुत सारे लोग जो है अपने घरों पे चले गए। We'll be asking some people right now. Hi and how are you? Great, how are you? So, Sure, why not? So how long have you been following the Shir Halal Gyro? As you guys know, we opened our second branch for you guys Yeah. to make it easier for you. What do you want to say about that? I'm excited. This is gonna be fun. Let's see how good it is. So do you like the food? I do. I like it, the one downtown. So I'm excited to try this one out. Oh, What is your favorite course in all the menu and favorite dish? Chicken over rice with double sauce. with double sauce. Yeah. Both sauces. Yeah. Okay. Thank you, sir. course. Thank you so much. Yeah, we'll be asking more people right now. So let's ask people what do you want to say. So we've been fans of the Halal Cart for 4 years now. Very loyal customers. Every single Friday without fail, come to the Halal Cart. My friend he's a strict vegetarian, but his first meal of eating non-veg in his entire life was Halal Cart, and now he only eats Halal Cart. Yeah, so we're very big fans, and excited for the new store opening. I live right here, so it's going to be close to my house, so I'm very happy. I'll be there all the time. So I hope for the success of the Halal Cart and the people that stand behind it. Thank you so much. Thank you. I like chicken and lamb over rice, you know what I'm saying? I like the chicken and lamb over rice. I came out here to State College from Altoona, you know. Came all the way out here to taste the chicken and rice truck, you know, get more clientele. I go back home and let them know what's going on, you know. Okay. You're from Altoona? Huh? You're from Altoona? Altoona, yeah. Yeah, all of us. We just came out Altoona. Yeah. We came deep too. So you're just visiting for like, it's just a normal visit? It's like we came out here for Easter egg. You know, it's Easter, so you know while we was out here, we stopped at the venue. That's all. So is there any halal cart in Altoona? or- Say it again. Is there any halal cart? There's in no Altoona? halal trucks. I need to come out there, honestly. I need to come out there. I need to come out there. Come to Altoona Chestnut Sheets by the hospital, right by the hospital, and Sheets right there. You're gonna set up. You're gonna be perfect. I guarantee you. Guarantee Thank you you. so much. तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। जिस तरह आप लोगों ने देखा, बारिश भी हो रही थी और हमें ये डर था कि बारिश की वजह से लोगों को अज़ीमत का सामना ना करना पड़े, लेकिन शुक्र है बारिश रुक गया और ईस्टर की वेकेशन भी थी, यानी तकरीबन 40% स्टूडेंट जो है वो अपने घरों में जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद इतनी लंबी लाइन थी। तो ये शेर हलाल कार्ट का सेकेंड लोकेशन है और ये स्टेट कॉलेज पेंसिल्वेनिया में पेन स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है उसका मेन कैंपस, छोटा सा टाउन है जिसका नाम है स्टेट कॉलेज, और इस मेन कैंपस का नाम है यूनिवर्सिटी पार्क। तो इसमें ये उसकी सेकंड लोकेशन है। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, मुख्तलिफ कल्चर आप लोगों को दिखाते रहेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के और पेंसिल्वेनिया के। तो उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। अनटिल द नेक्स्ट वन, अल्लाह हाफिज़।